हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जुडिशरी के जो पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर को लेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने महाराष्ट्र और गुजरात जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर को डिस्कस कर लिया है। एंड पेपर को डिस्कस करना इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट द type of the question which were asked frequently in last examinations. So let's get start. First question है कि no order of attachment passed under order 39 rule 2A shall remain in force for more than, इसका आंसर होगा 1 year। तो इसके लिए आप अपना जो CPC है उसका बेरक देख सकते हैं। उसके 39 ऑर्डर के रूल 2A ऑफ 2 में सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है कि नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द disobedience or breach continues, the property attached may be sold and out of the proceeds. The court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto. Next question है production of additional evidence in appellate court is permissible under which of the following provision? Additional evidence तो ये कौन से वाले ऑर्डर में दिया गया है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर 41 रूल 27। तो इसके अंदर ये दिया गया है। तो जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है अंडर रूल 6 रूल 17 ऑफ CPC अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैन बी अलाउडेड अप टिल वॉट स्टेज ऑफ द सूट। तो 3 का जो है इसका आंसर हो जाएगा एट एनी स्टेज। तो जब आप देखोगे ये रूल 17 ऑर्डर 6 का तो वहाँ पे लिखा गया है एट एनी स्टेज, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए कमर्शियल सूट व्हाट इज द कंसिक्वेंस इफ द प्लीडिंग इज नॉट अकम्पेंड विद स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। तो ये जो है 4 नंबर का ये दिया गया है ऑर्डर 6 के रूल नंबर 15A में, और वहाँ पे गिवन है स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द प्लीडिंग। तो इसके लिए आपको इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज द कोर्ट कैन नॉट इशू ए कमीशन। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो कोर्ट है ये कमीशन इशू करती है, इसको CPC के 75 नंबर सेक्शन में बताया गया है। वहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं कि कब कब इशू हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो वहाँ गिवन नहीं है, यानी फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशू कमीशन जो है इशू नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है इन ए समरी सूट अपॉन बीइंग ड्यूली सर्व्ड विद द समन्स plaintiff and annexer the defendant is required to enter appearance within how many days। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रूल नंबर 38 ऑर्डर नंबर 38 का रूल नंबर 3 वहाँ पे गिवन है 10 days आंसर होगा। इन ए कमर्शियल सूट, अब ये जो ऑर्डर नंबर के जो रूल्स पूछे गए हैं ये आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रीवियस ईयर में जो आपको मिले वो आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको देखना पड़ेगा ताकि रिपीट हो तो आपके गलत ना हो। नेक्स्ट है कि इन ए कमर्शियल सूट अपॉन एक्सपायरी ऑफ 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन द डिफेंडेंट। ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हैं। तो यहाँ होगा forfeits द राइट टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट। अगला है कि कोर्ट can order substitute service upon defendant upon being satisfied that the defendant is avoiding service, the summon cannot be served in ordinary way। तो both A and B ऑर्डर 5 के रूल नंबर 20 में गिवन है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ कैन बी मेड अंडर ऑर्डर 9 के रूल नंबर 9 में। मे बी इट सीम डिफ़िकल्ट कि यहाँ पे ऑर्डर्स से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे,
तो जो ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का हमने पेपर लिया, इसमें 200 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो इसमें कुछ तो डिफ़िकल्ट मिलेंगे आपको क्वेश्चन, और काफ़ी इजी भी हैं क्वेश्चंस, तो देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट है, कोर्ट में स्ट्राइक आउट एनी इशू दैट अपीयर्स टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड बिफोर पासिंग ए डिग्री। ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे 14 रूल 5, डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी मे बी एग्जीक्यूटेड बाई डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन प्रिजन एंड अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। तो दोनों ही हो सकता है यहाँ पे। ऑर्डर 21 रूल 30, ए फॉरेन जजमेंट शैल नॉट बी कंक्लूसिव वेयर it has not been given on the merits of the case, it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, it has been obtained by fraud। तो कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं कि तीनों सही लग रहे हैं। कंडीशन डी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेक्शन 13 जो है सीपीसी का, वहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, उनमें ये कंडीशन गिवन है कि व्हेन फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ सीपीसी कैन ए कोर्ट एग्जामिन द पार्टीज टू द सूट। तो ऑर्डर 10 में, ऑर्डर 10 का ये टाइटल है। तो टाइटल्स भी आपको पता होनी चाहिए, टाइटल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट एग्जाम जब हम डिस्कस किया था तो उसमें ऑर्डर 11 से पूछा गया था, अब यहाँ पे ऑर्डर 10 से पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। Failure on behalf of the plaintiff to file document along with the plaint where the suit appear from the statement in plaint to be barred by any law, where it does not disclose a cause of action, where deficient court fee has been paid। तो नोट पूछा है, नोट द ग्राउंड, ए आंसर होगा यहाँ पे 14 के में। अगला क्वेश्चन है कि while entering appearance in a summary suit the defendant is required to file which of the following। ऑप्शंस दिए हैं, एड्रेस आंसर होगा। व्हाट आर द कंसिडरेशन फॉर डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। प्लेंट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्लेंटिफ। Where temporary injunction is granted in favor of the plaintiff without giving notice of the application to the opposite party, the plaintiff shall deliver to the opposite party copy of the application for injunction, copy of the plaint, copies of document on which the plaintiff relies, all of the above। all of the above आंसर होगा। If a party who has obtained an order for leave to amend and pleading does not amend accordingly within the time limited for the purpose by the order, or if no time is limited, then within 14 days from the date of the order he shall not be permitted to amend the pleading unless the time is extended by the court। Where a receiver appointed by the court fails to pay the amount due from him as the court directs, the court may direct attachment and sale of the property of the receiver। The court may award cost at the time of final disposal on the party which causes delay by not producing evidence, fails to take step required to be taken on the date, all of the above। all of the above आंसर हो जाएगा। Which of the following cannot be attached and realized in execution of decrees। ए आंसर होगा, स्टिपेंड्स एंड ग्रेट्युटी, अलाउंस टू पेंशनर और पेबल आउट ऑफ फैमिली पेंशन। The court may compel the attendance of any person to whom the summons have been issued by issue a warrant of arrest, attachment and sale of his property, impose fine not exceeding ₹5,000। all of the above। all of the above आंसर हो जाएगा। A file से सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹1,00,000 फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इंटरेस्ट at 24% per annum, the court decrees the suit for 1,00,000 but is silent about the interest। Aggrieved person must file an appeal under section 96 of CPC। A decree passed ex parte under order 8 rule 10 CPC can be assailed by way of appeal under section 96 and appeal under order 9 rule 13 CPC। Any commissioner appointed by the court under यहाँ पे दिया गया है 28 cannot do the following act।
cannot impose penalty on the parties. ए है वो शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में. ए बी सी टुगेदर गो टू बनारस एंड बी एंड सी मेक ए जॉइंट promissory note payable on demand and deliver it to A. B and C default in payment. A cannot file a suit for recovery at. जहाँ पे प्रतिवादी रहते हैं वहाँ पे फाइल कर सकते हैं. शिमला वेयर द प्लेंटिफ रिजाइड आंसर हो जाएगा. अगला है ए इज dispossessed in A suit for possession filed by B. In appeal, the decree of possession is set aside. The defendant may claim restitution of possession by moving an application before the court which passed the decree in first instance में जिसने की थी. अगला है ए है वो लैंडलॉर्ड है, फाइल से सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम टी द टेनेंट फॉर 3 years एट ₹7,000 per month. टी द टेनेंट डिनाई द एरियर्स ऑफ रेंट एंड क्लेम द रेट ऑफ रेंट टू बी 2,000 per month and that suit is barred under section 50 of Delhi Rent Control Act 1956. The court may frame all the issues of fact and law and pronounce the judgment on all the issues after recording evidence. Next question है कि the court while framing the issue may consider allegation made in pleadings, content of the document produced by either party, statement made on oath by the parties before the court, all of the above. अगला क्वेश्चन है a person aggrieved by decree or order from which an appeal is allowed but not preferred may seek review on the ground. Error apparent on the face of record, was unable to produce evidence despite due diligence or was not in his knowledge for any sufficient cause, all of the above. All of the above आंसर हो जाएगा. Which of the following is true? For deciding the question as to whether a document is a will of Mohan, तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस. The fact that Mohan made inquiry from his friends into matter to which the provision of the will relate is irrelevant बोल दिया है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा. The fact that Mohan consulted advocate in reference to making the will is irrelevant. Irrelevant नहीं है, irrelevant है. The fact that from Mohan personal locker several drafts of other wills are found which he did not approve is relevant. None of the above is true. Which of the following is true? Is Shyam is accused of a crime? Question दिया है कि the fact that the commission of the crime Shyam absconded from his house is irrelevant. अब इसको irrelevant बोल दिया जबकि irrelevant होगा. The fact that at the time when they left home Shyam had sudden and urgent business at the place to which he went is irrelevant. The details of the business on which he left is not relevant even if it were to show that the business was sudden and urgent. तो irrelevant बोल दिया, इसलिए none of the above is true. When existence of a state of mind or body or bodily feeling is an issue, which of the following facts are relevant? Intention and knowledge, negligence and rashness, ill will or goodwill, all of the above. All of the above आंसर होगा. अगला है statement of a person who is dead is admissible under section 32 of Evidence Act, dying declaration, if it relate to the cause of his own death. अगला है under section 45 of the Evidence Act, the opinion of the expert can be for handwriting or a finger impression for in-law science or art, both A and B. तो 35 का जो है इसमें हो जाएगा सी आंसर. अगला है श्याम कैन बी सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ रमेश इफ श्याम ने अगर उसकी राइटिंग देखी हो या फिर श्याम ने लेटर देखे हो उसके लिखे हुए या फिर श्याम हैज सीन एप्लीकेशंस परपोर्टेड टू बी हैव बीन सबमिटेड बाय रमेश टू श्याम्स बॉस एंड नन ऑफ द अबव. तो 36 का जो है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट है, इसके लिए आप 47 इंडियन एविडेंस एक्ट देख सकते हैं. कोर्ट इज obliged to take judicial notice of all public act passed by the Parliament of United Kingdom, the court of proceeding of Parliament of United Kingdom, both A and B and either A and B. 37 के में सी आंसर हो जाएगा. इंडियन एक्ट का 57 का जो सेक्शन है वो देख सकते हैं इसके लिए. अगला है सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन.
when original is in possession of the opposite party, when the existence, condition or content of the original have been admitted by the opposite party. Original is in power of a person out of reach of the court, all of the above. 38 का जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं 65 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का। अगला है ए प्रिंट आउट ऑफ ए फोटोग्राफ टेकन बाय ए मोबाइल फोन इज सोट टू बी प्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इट वुड बी एडमिसेबल। दिया है कि द डिजिटल फाइल कंटेनिंग द फोटोग्राफ वॉज कॉपीड ऑन टू ए पेन ड्राइव फ्रॉम द ओरिजिनल कंप्यूटर एंड द प्रिंट आउट इज टेकन फ्रॉम द एडवोकेट्स computer. The original file is sent over email to the advocate and printed out by the advocate in his office. The file is sent over WhatsApp to the advocate and printed out by the advocate. आंसर यहाँ पे डी होगा, none of the above. अगला है to prove a registered document production of an attesting witness is not required if the registered document is a sale deed, the registered document is a will, the registered document is a gift deed. गिफ्ट डीड एंड सेल डीड हो तो ए एंड सी आंसर हो जाएगा। अंडर सेक्शन 82 ऑफ द एविडेंस एक्ट, व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर ए कोर्ट, द कोर्ट हैज टू प्रिज्यूम that the seal stamp and signature is genuine, and that the person signing it held that judicial or official character that he claimed. both A and B ही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है when a document is produced from any custody which the court is in particular case consider proper, the court may presume such document to be genuine if it is proved that the document is 30 years old. सेक्शन नंबर 90 देखना है इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का। मोहन सू करता है सोहन को फॉर मनी ड्यू ऑन ए बॉन्ड, द बॉन्ड वाज केप्ट ऑन द कस्टडी ऑफ श्याम, द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड बाय सोहन बट ही स्टेट्स दैट द बॉन्ड वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, द बर्डन ऑफ प्रूफ वुड लाई ऑन। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किस पे होगा? अब यहाँ पे सोहन जो है वो बोलता है कि ये ऑब्टेन करा गया फ्रॉड के थ्रू, इसलिए अब सोहन पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ है। इस तरीके का एक इलिस्ट्रेशन 101 तो डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ से, इसके अलावा 102 भी जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे इस तरीके का एक इलिस्ट्रेशन दिया गया है, तो वो देख सकते हैं। अगला है फॉर प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन टू अराइज इट मस्ट बी शोन दैट। 44 के में आंसर हो जाएगा बी, हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव सब्जेक्टेड हर टू क्रूलिटी। तो देख सकते हैं सेक्शन 113 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 113 ये बात करता है कि अगर सुसाइड जो है वो उसने विद इन 7 ईयर में किया हो, यहाँ पे आफ्टर 7 ईयर दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है और उस पर क्रूलिटी की गई हो, इसलिए ये बी जो है वो ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, a shopkeeper is found in possession of a marked stolen 100 rupees note which he cannot account for। तो इसके लिए यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का 114 नंबर का सेक्शन देख सकते हैं। द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट ही इज थीफ, तो ऐसा तो नहीं होगा। द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट ही हैज़ रिसीव्ड द करेंसी नोइंग इट टू बी स्टोलन, तो ऐसा नहीं है। सच प्रिजम्पशन विल नॉट राइज इफ ही कंटिन्यूअली रिसीव मनी इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, नहीं। नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बिकम ए विटनेस, तो ये पूछा है विटनेस कौन नहीं बन सकता है। lunatic who is not prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rationable answer। इसके अलावा an adult whose body and mind are not functioning, child who is sufficiently developed to answer, a deaf and dumb person। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहे हैं बॉडी एंड माइंड, तो ये बी जो है ये आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 135 ऑफ इंडियन एविडेंस।
Act. The order and production and examination of witness in civil suits in the following. सेक्शन 135, ये लास्ट वाला था, इसमें 118 है, सेक्शन 118। और 135-47 वाले में द ऑर्डर एंड प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन सिविल सूट्स इन द फॉलोइंग. First the plaintiff, then the defendant, first the defendant and then plaintiff at the discretion of the parties as per law and practice. तो 47 का होगा as per law and practice. Which of the following is a leading question? लीडिंग क्वेश्चन कौन सा है? तो आर्टिकल सेक्शन 141 इंडियन एविडेंस एक्ट. Any question suggesting that the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question. तो 48 में आंसर हो जाएगा. What did you see on that day of the incident? How did you reach the spot of the Ajay confessed to you that he killed Pankaj. What time did you leave home on 1st January? तो ऐसा क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होगा जिसमें पुटिंग इट विशेष और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन. अब यहाँ पे जैसे सी है तो ये पूछ रहा है कि अजय ने कन्फेस कर लिया कि कन्फेस किया है तुमसे कि दैट ही किल्ड पंकज. तो वो पूछ रहा है कि हाँ नाम में जो भी है, तो ये जो है सी, ये आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रीली इन. तो इसमें होगा री एग्जामिनेशन 146. नहीं, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, लास्ट पेपर में भी था ये. क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन. इसके लिए आप देख सकते हैं 143 इंडियन एविडेंस एक्ट. अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट एंड बियॉन्ड एग्जामिनेशन इन चीफ can be to the witness to test his veracity and shake his credit, discover who he is and what is his position in life, both A and B, neither A and nor B. 50 के में सी होगा आंसर. 146 देख लेना इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का. तो 3-4 कंडीशन वहाँ पे दी गई हैं. अगला है ए प्लेंटिफ फाइल से सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट which involve performance of a continuous duty which the court cannot supervise. Will the court grant specific performance of such a contract? तो स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 14 देखना है. उसमें दिया है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ग्रांटेड. तो वहाँ पे कंडीशन दी है कि कौन से टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इनफोर्स्ड. तो वहाँ पे ये दिया गया है. अगला क्वेश्चन है ए प्लेंटिफ हु इज नॉट इन पोजीशन फाइल से सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल विदाउट सीकिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. वुड द कोर्ट ग्रांट सच ए डिक्लेरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नो, सच ए डिक्लेरेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड. अगला है टेम्परेरी इंजेक्शन अंडर 37 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट. तो इसके लिए सेक्शन 37(1) में देखेंगे. तो यहाँ पे जो आंसर है इट कैन बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज. ये क्वेश्चन भी लास्ट पूछा गया था, लास्ट पेपर में भी था. ए प्लेंटिफ फाइल्स ए सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन अंडर सेक्शन 40 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? प्लेंटिफ कैन क्लेम बोथ इंजेक्शन एंड डैमेज.
अगला क्वेश्चन है मिस्टर ए मेक्स एन एलिगेशन दैट मिस्टर बी असॉल्टेड हिम एंड फिजिकली इंजर्ड हिम। मिस्टर बी बोलता है कि द एलिगेशन है वो गलत है। ही सीक टू फाइल ए सूट टू रिस्ट्रेन मिस्टर ए फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए क्रिमिनल मैटर इन व्यू ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ ट्रू 1963 विच वन इज ट्रू। तो आंसर्स और यहाँ पे बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। The court can restrain Mr. A from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter. नहीं. Court can pass a restraint order provided it to prove that Mr. A is making a false allegation. नहीं. The court can pass a restraint order in favor of Mr. B. नहीं. No such injunction can be granted. इसके लिए आप देख सकते हैं 41D. वहाँ दिया गया है to restrain any person from instituting or proceeding. An injunction cannot be granted to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter. 56 का है कि plaintiff on account of his illness is unable to file the civil suit within the period of limitation prescribed under Limitation Act 1963. He filed the suit along with an application for condonation of delay on the ground of his illness. Can the court condone the delay in filing the suit under section 5 of the Limitation Act 58 56 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है तो नो द कोर्ट कैन नॉट condone the delay. Next है what is the limitation period for filing a suit for recovery of price of goods sold and delivered where no fixed period of credit is agreed upon to make payment for the goods. 3 years from the date of delivery of goods. Next है what is the limitation period for a suit for possession of immovable property based on title. इसका आंसर होगा 12 years from the date when the possession of the defendants become adverse to the plaintiff. अगला है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट एक्नॉलेज हिज लाइबिलिटी इन राइटिंग साइंड बाय हिम देन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम विच डेट. From the date of acknowledgement of the date in writing and signed by the defendant. The limitation period for a suit for an account and a share of profits of a dissolved partnership firm is 3 years from the date of dissolution of the partnership. What is the limitation period to have the legal representative of a deceased plaintiff made a party under the Code of Civil Procedure 1908? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 days from the date of death of the plaintiff. Where the prescribed period for filing a suit expires on a day when the court is closed, then the suit must be filed on the day when the court reopen. Under Section 6 of Limitation Act 1963, the limitation for a region who is entitled to institute a suit is extended if a person is a minor or insane or an idiot. The period of limitation for filing a suit for specific performance of the contract is as follows. Three years from the date fixed for performance, or if no such date is fixed, when the plaintiff has noticed that performance is refused. Next, a suit is filed by the plaintiff after the expiry of the period of limitation. The defendant does not set up a defense that the suit is barred by limitation. In such circumstances, the suit, even though the defendant had not set up defense of limitation, is liable to be dismissed. A is a jailer has charge of judge prisoner intending to cause his death. A illegally omit to supply judge with food. This causes judge's strength to reduce and cause him weakness. Why another prisoner who is unaware of his weakness gets into fight with judge, which result in the death of judge, which may not have happened if judge was given adequate food.
nutrition. Keeping section 37 and 300 of the code in mind, which of the following is true? ए ने यहाँ पे कमिट किया है अटेम्प्ट टू मर्डर एंड वाई हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो बाकी के चार ऑप्शन देखेंगे तो आप इजीली नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है जज सेक्शन गिव ए सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एंड ए स्टार्ट अटैकिंग जड बी हैपन्स टू चांस अपॉन द फाइट एंड डिसाइड टू असिस्ट ए इन अटैकिंग जड एज अ रिजल्ट जड डाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे होगा ए हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर एंड बी हैज कमिटेड मर्डर। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए विद द इंटेंट ऑफ causing mischief on B set fire to his house unknown to A. X was sleeping in the house at the time. X narrowly escaped the fire and suffered serious burn injury and is hospitalized for 3 weeks. A did not have an enmity against X and displayed great remorse for the fact that X got hurt. Which of the following is true? तो ये माना जाएगा कि A has voluntarily committed attempt to murder and grievous hurt of X. इसके लिए आप 307 जो है सेक्शन वो देख सकते हैं आईपीसी का। What is the maximum period of imprisonment which can be imposed on a person who is in a state of intoxication, enters in a public place and cause annoyance to other persons? तो ये आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। 510 जो है आईपीसी का उसमें गिवन है। अगला है एक्स एडमिनिस्टर करता है ए पॉइजन टू वाई विद द इंटेंट टू कॉज हर्ट टू वाई। एक्स इज फाउंड गिल्टी एंड इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट मे बी इम्पोज ऑन हिम। इंडियन पिनल कोड का 60 नंबर सेक्शन जो है वो बात करता है यहाँ पे एक्स में बी सेंटेंस टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर टू बी सर्व्ड एज पार्टली रिगोरस एंड यहाँ पे पार्टली सिंपल इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट है X is caught by the police counterfeiting Indian coin. Since it was his first offense and in view of the fact that a very small number of coins were recovered, the session judge convicted X of offense under section 232 of IPC and sentenced him to imprisonment only for a period of 6 महीने 4 year after his release. X है वो दोबारा यहाँ पे was apprehended by the police and eventually convicted offense under section 420 of the IPC for the purpose of sentencing X. Which of the following is true? X सेंटेंस कैन बी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। जज जो है वो इनवॉल्यूंटरली इंटॉक्सिकेटेड एंड लेफ्ट एट एज हाउस बाय अननोन क्रिमिनल्स। जज एंटर करता है एज हाउस इन द इंटॉक्सिकेटेड स्टेट एंड अटेम्प्ट्स टू रेप ए ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ जज to rape her hits jud with a heavy object causing his death. Which of the following is therefore true? यहाँ होगा irrespective of judge state of intoxication A only exercise her right private defense में उसने यहाँ पे यूज किया and therefore has not committed any offense। तो C जो है वो ये आंसर हो जाएगा। अगला है A offers B money to murder C. B does not murder C but instead decide to steal C's imported car and is apprehended by the police. During his interrogation, B reveals his conversation with A to the police. Since B did not even attempt to murder C, which of the following is true? A जो है वो गिल्टी है यहाँ पे इसको उकसाने के लिए, तो abetting B to commit murder. Next, what is the maximum duration of sentence of imprisonment that can be imposed on person found to have committed the offense of affray? तो आईपीसी का 160 जो सेक्शन है उसमें दिया गया है 1 month आंसर होगा।
Next, a proclamation if published under Section 82 of CRPC against X, who is required to appear before a session judge at the specified time at a specified place. X, however, does not show up to such proceedings. What is the maximum period of imprisonment that can be imposed on X on account of his failure to appear? 3 ईयर तक का। इसके लिए देखना पड़ेगा इंडियन पिनल कोड का 174A। नेक्स्ट है एक्स, एक पुलिस ऑफिसर है, जस्ट असाइंड द जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर ऑफ ए। ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन he finds several key places of evidence such as the murder weapon, all of which lead him to the conclusion that B has murdered X. And X tells B that he is willing to conceal the evidence in exchange for the sum of rupees, यहाँ पे 10 lakh. What is the longest sentence of imprisonment that can be imposed on X for offense under section 213 of IPC? 7 year. Next है section 292 of IPC provide for punishment of cell etc. or obscene books and provides for a penalty of up to 2 years for a first time offender. Section 293 however apply in a situation when cell etc. obscene object is made to young person, and enhanced punishment of imprisonment of up to 3 years for first time offender is provided for. In this context, what is the meaning of a young person? Person under the age of 20. X murdered A and was sentenced to life imprisonment. While serving his sentence, X murdered another inmate B. Which punishment must follow for his action? X may be sentenced to life imprisonment or death. Next is 79. A and B, being the parents of infant X, abandon the infant in the middle of the night during the winter season. As a result, the X suffers from hypothermia. X is discovered by a good Samaritan who rushes X to the hospital. Unfortunately, the facilities at the hospital were inadequate, or X dies. During the course of the investigation, it is also revealed that the X may have survived if X has received appropriate medical cases at the hospital. In these circumstances, offense under which provision of the Indian Penal Code have been committed by A and B? तो यहाँ पे चार्ज 302 का भी लगेगा, 317 का भी लगेगा। 302 का क्या लगेगा? 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. और 317 लगेगा, whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with the imprisonment and either description for a term which may extend to the 7 year or with fine or with both. Next, X after having been invited for a party enters the property of A. X invitation is however only confirmed to the loans outside the dwelling house of A's property and for the duration of the party. After the end of the party, X hides in the bushes and waits for the other guests to leave. Thereafter, X opens a lock in A's dwelling house and enters with the intent to annoy A without being seen by A. What offense has been committed by X? Housebreaking. 406 में given है. X एक businessman है, deducts his employees' contribution from the wages payable under the Employee Provident Fund Act 1952. He, however, fails to deposit the amount in accordance with law in the fund. Which of the following is true? So X has committed offense under section 405 and 406. X enters Judd's dwelling house armed with a gun to steal jewelry. X is able to successfully perform the theft and steal the jewelry. X, however, does not use the gun and simply leaves after successfully taking the jewelry out of the possession of Judd. Under which section of law is X liable to be punished?
382। 83 में दिया है कि A was found to have attempt suicide. A, however, was not successful. Investigation revealed that B had instigated A to attempt suicide. What are the consequences which will follow? A shall not be punished for his offense, but B shall be punished for abatement of attempt to suicide. Which of the following statement is correct? आंसर है यहाँ पे बी. टू अट्रैक्ट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 149 आईपीसी इट मस्ट बी शोन दैट द अक्यूज्ड पर्सन शेयर्ड the knowledge amongst themselves that the act is likely to be committed in the prosecution of the unlawful act. Lawful guardian in the context of the kidnapping under section 361. Any person lawfully entrusted with the care of custody of the minor. The punishment for the offense of forgery of a will कहाँ पे given है ये 467 of IPC. 87 में दिया कि X is convicted of offense under Article 489 of the IPC, which is punishable only by fine. X is sentenced to have fine of rupees so. X, however, is unable to pay this fine. How long can X be imprisonment for his failure to pay the fine amount? For 4 months. तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है. 67 जो आईपीसी का उसमें ये गिवन है कि 2 मंथ होता है तब तो 50 रुपये और 100 रुपये का है तब 4 मंथ हो जाएगा. इससे ज़्यादा का फिर 6 मंथ. X, the president of a hospital, refused to treat A, who has been brought to his hospital while suffering from grievous hurt after a fight. X had some personal enmity against A and did not wish to assist in saving his life. The ambulance therefore speed off to a nearby hospital where A was given treatment. Fortunately, A survived. Has X committed any offense? X has not committed any offense given है यहाँ पे. तो गलत दे रखा है यहाँ पे. आंसर होगा कि X हैज़ कमिटेड ऑफेंस अंडर 166B ऑफ IPC. अगला क्वेश्चन है द मिनिमम पनिशमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. किडनैपिंग फॉर ransom, kidnapping in order to murder, trafficking of a person, habitual dealing in slaves. तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा मिनिमम पूछा है. मिनिमम पनिशमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ए यहाँ पे आंसर होगा. अगला है A and B were married in 2013, had one child. After living together for few years, January 2019 में they decided to separate. No formal proceeding were initiated in court of law and A and B decided to live apart with mutual consent. In the year 2022, the birthday celebration of the child were taking place. And after the other guest had left and after consuming alcohol, B had sexual intercourse with his wife A without her consent. It is important to remember that both A and B had consumed alcohol. Has B committed any offense keeping in mind the provision relating to sexual offense? Yes, यहाँ पे 376 जो है 376B उसके अंतर्गत B has committed an offense under the IPC. Which of the following statement is correct? यहाँ पे सी आंसर होगा. The provisions contained in the code regulate the investigation, inquiry or trial in relation to offence under laws other than Indian Penal Code subject to the provision of such other enactment. 92 में है a metropolitan magistrate is subordinate to the chief metropolitan magistrate of the metropolitan areas, but an additional chief metropolitan magistrate appointed in same area may not be subject to such subordination. To both are subject to the general control of the session judge of the same session division. The above statement is correct. The above statement is correct, but subject to order that may be passed by the High Court defining the
extent of subordination if any of the additional chief metropolitan magistrate. Both A and B are incorrect. Both A and B are correct. Both A and B are incorrect. When, after hearing the evidence for the prosecution and the accused in a trial on charge for five offences, each punishable imprisonment that may extend to 3 years, the additional chief metropolitan magistrate is of the opinion that the accused is guilty. He may pass a judgment of conviction and sentence him to terms of imprisonment on each count, directing it to run consequently, but such that the aggregate punishment does not exceed 14 years of imprisonment. It is lawful to use reasonable force necessary to compel a person arrested on charge of committing an offense to facilitate a lab technician of a private clinic of a registered medical practitioner to gather sample of his sweat when there are reasonable ground for believing that the examination of the same will afford evidence as to commission of an offense, provided that it is so done as the request of a police officer not below the rank of sub inspector and in good faith in the aid and under direction of the registered medical practitioner, provided that it can be so done as in first above in case the offense alleged to have been committed is rape or attempt to rape only in the absence of a medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority within the radius of 16 kilometers from the place where the offense is stated to have been committed. Both A and B are correct. A person arrested on charge of committing an offense may be directed by the jurisdictional court on the request of the officer in charge of the concerned police station to undergo test identification by any person who may have witnessed the act constituting the offense and may be privy to the identity of the perpetrator in such manner as court deems fit under supervision of the judicial magistrate if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled. The identification proceedings shall be mandatorily videographed if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled. All the above statements are correct. In order to arrest a person from within an apartment which the person to be arrested is reasonably believed to have entered, the police officer having the authority to so arrest may demand a person residing in the apartment to afford free ingress thereto and all reasonable facilities for such by such police officer. A person accused of the offense of driving a motor vehicle on a public way so rashly or negligently as to endanger human life jumps ball and is reasonably believed to be concealing himself so that the warrant of his arrest issued by the court cannot be executed may after 30 days of issuance and publication in accordance with law of a proclamation requiring him to appear at the specified place and time भी. तो सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा सारे ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं all the above statement are incorrect. A criminal court issuing a proclamation requiring a person to appear at a specified time and place on basis of reason to believe that he is absconding or concealing himself so that a warrant of arrest issued against him cannot be executed may simultaneously order the attachment of any property belonging to such person if it is satisfied that the person is about to dispose of the whole or part of his property, remove the whole or part of his property from the local jurisdiction of the court. Either condition first or second mentioned above must exist. Next, L, the landlord, in respect of one room house let out by him in favor of T, was prosecuted on the charge of house trespass after physical assault and causing simple hurt to T, and has been convicted for the criminal offence. It being also proved to the satisfaction of the metropolitan magistrate that by use of such force, T was disposed of the tenant property. It is permissible for the trial court to order restoration of possession to T. Yes, but without prejudice to right or interest of the person in possession as may be established in a civil suit.
सो का जो क्वेश्चन है उसमें है, ए वेगाबॉन्ड एंड होमलेस बॉय है जिसकी एज 12 है, इज फाउंड रनिंग इन द स्ट्रीट पुशिंग अवे ए कार्ट फुल ऑफ बनानाज एंड अपॉन बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सब डिवीजन इज अनेबल टू satisfactorily account for the same. There has been no report of the theft, but the police officer has reason to suspect that the same is stolen property. The police officer may seize the above said property. The police officer having seized the above said property may, with the approval of the superintendent of police, sell by auction the bananas if their value is less than 500 rupees and report to the magistrate who may place the sale proceed at the disposal of the state if rightful claimant is not found within 6 months. Both A and B are correct. Both A and B are correct. 100 क्वेश्चन हमने कर लिए और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस ये थे। तो बाकी के जो 100 क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इनको देख लेना, अच्छे से रीड करना। क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, तो पर्पस भी हमारा यही है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएं और हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका सिलेबस है साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा।